Hello everyone. We are going to cover the topic of structural implementation. Yesterday we had seen how it is a part of activating the strategies and how the structural implementation and the behavior implementation plays a vital role, right? So before going ahead, we need to understand what do we mean by the word structure. Okay, when we are talking in context of organization, so we need to understand what is organization structure. So you can say organization structure is the company's formal configuration of its intended roles, procedures, governance, authority and decision making processes, right? So in simple words, if you say कि एक organization में duties and responsibilities क्या हैं, positions क्या हैं, रोल्स क्या हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज का क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर फ्लो हो रहा है, डिसीजन मेकिंग का क्या ऑर्डर है, क्या फीडबैक सर्कल है. So all that decides what is the structure of that particular organization, right? कि ड्यूटीज कैसे डिफाइन की गई हैं, पोजीशंस कैसे डिफाइन की गई है. So all this leads to the structure of an organization. So from a strategy implementation standpoint, an organization structure is the arrangement of all the tasks and activities which are required to implement a strategy. कि उनका configuration क्या है, उनका arrangement क्या है. So we get to know three important points from this. First is कि formal reporting system क्या है, relationship क्या है, वहाँ पे hierarchy level क्या है, okay. और span of control of manager. Span of control of manager, if you remember the functions of management, those 16 functions which were given by Henry Fayol. So what was span of control? What is the control system? Under one person, how many people he is controlling? That defines the span of control, right? And then second key component which we get to know from the structure of an organization is कि individuals की जो grouping की हुई है departments की, वो किस criteria पे, किस basis पे की गई है. Then it consists of the design of systems to ensure effective communication और coordination कैसे flow हो रहा है, and communication के बाद feedback cycle आपका loop hole कैसे उस loop को complete कर रहे हैं. Okay, so these three components we get from the structure of organization. Now see, these are broadly, if you define the structure of an organization, you can say it is either vertical structure or horizontal structure. Vertical structure is also known as tall structure because anything which flows vertically means, you know, like this when it flows. This is your vertical structure, and if it flows horizontally, this is your flat structure. So in vertical structure, what happens? It is very good there where specialized tasks are there. हायरार्की अथॉरिटीज का हमें इजीली पता लग जाता है कि जो ऊपर है वो टॉप लेवल है, जो मिडिल में है दे आर समवेयर अबव द लोअर पीपल. देन उसमें जो उसके वर्टिकली कैसे जा रहा है, इट डिफाइंस द हायरार्की आल्सो which is followed in the organization. Then rules regulations कैसे फ्लो हो रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे है, कौन कहाँ से किसको रिपोर्ट कर रहा है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है या नहीं है, या फिर कितना डिसेंट्रलाइज्ड किया गया है. आफ्टर दैट एफिशिएंसी पे कितना एम्फेसिस है, राइट. सो देयर वर्टिकल स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट. व्हाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर इज नीडेड? सी दे आर समटाइम्स a shared group of activities or shared tasks. When a teamwork is to be done, suppose some part of a project is performed by the HR people, and then the same I mean on the same project your production people will be working, so they tell them ki this is how we have recruited so and so manager and whatever the things are, and after that they send it to production, they'll be working on that, then it goes to marketing, this is how they'll be marketing the product. So if it is a kind of teamwork, their horizontal structure is dominant. Flexible authority, vertical structures are very rigid. Rigid in the sense whatever has been defined they have to follow the same. उसमें कोई flexibility नहीं होती है. बट horizontal थोड़ा informal kind का structure होता है, जहाँ पे थोड़ी informal activities होती है, वहाँ पे generally horizontal structure prevail करता है. Few rules and regulations होते हैं as compared to vertical structure. Communication, sharing of information, ये बहुत easily and बहुत loosely होता है. Although in case of vertical, आपकी जो communication and information है, it has to be concrete. If you know grapevine, that is informal communication, that is a part of your
horizontal structure, not a part of your vertical structure. डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा होता है, डिसीजन मेकिंग के आपस में मिलके वो लोग डिसाइड करते हैं. Then learning पे there is a emphasis. They share the things, they share the knowledge, they share the skills. So there is a emphasis on learning, right? So other than this, then comes the thing that why in strategic management we are talking about the structure, okay, and why it is important. See, strategy and structure, these are two interdependent terms. Interdependent in the sense कि जब हम strategy formulate कर रहे होते हैं, then we have to consider कि ये strategy कौन से department में जाएगी, कौन implement करेगा, कौन उसे control करेगा. So that we have to keep in mind while formulating the strategy, because हमारे जो structure है उसको हम consider करके we keep it in our mind and then we formulate the strategy. In the same way, if some changes are required, we make those changes in structure as well, right? So it is like this कि there should not be any mismatch between the strategy and the structure. They should go hand in hand. स्ट्रेटेजी की वजह से हमें स्ट्रक्चर में भी चेंजेस करना पड़ता है, और स्ट्रक्चर में चेंजेस के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन यू कम आउट विद अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, बट आपका स्ट्रक्चर अगर उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, देन इट वुड बी अ फेलियर. सो दैट मीन्स योर स्ट्रक्चर कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी. So that affects the execution part of the strategy, right? Your structure supports also and affects also. See, your structure is very important, but it is not that कि आपका structure अच्छा है तो एक even if it is a very bad strategy, it can make it a good strategy. It is not that. These are complementary to each other. It helps and it complements, but it is not that it can totally change it. So strategy formulate करते हुए हम अपने existing structure को ध्यान में रखते हैं, then we formulate the strategy, and in the same way जब उसे implement कर रहे होते हैं तो हम strategy के accordingly structure में भी changes करते हैं. That's why these are two interdependent things, right? So why it is this implementation needed? Structure implementation is important. See, we talked about it. Strategic plan हम लोगों के होता है, पहले हम एक न्यू स्ट्रेटेजी जो है हमने फॉर्मुलेट की थी उसको हम लेके आते हैं. व्हाट वुड हैपन व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग दोस न्यू स्ट्रेटेजीज? सम मिसमैच विल बी देयर. मिसमैच मे बी विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, मे बी विद द एचआर डिपार्टमेंट, या फिर हमारा जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है उसमें हमारी स्ट्रेटेजी फिट नहीं आ रही है. तो उससे क्या होगा? इट विल डिक्लाइन द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी, हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. सो वी नीड टू मेक द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर. देन हम अपने स्ट्रक्चर को अपडेट करेंगे. इफ स्ट्रक्चर इज सपोर्टिंग द स्ट्रेटेजी, द सेम स्ट्रेटेजी कैन बिकम इफेक्टिव एंड द परफॉर्मेंस विल improve, which will be again implemented, which will be again tried out, right? So this is a ongoing process, and this model was given by Chandler, and this is a ongoing model which keeps on going in any organization. It keeps on happening, right? After that, environment, strategy, structure, effectiveness. See, these all three are interrelated. We understood now that how strategy supports the structure and how structure affects the strategy, and all these together, these lead to the effectiveness. Now there are four kinds of, just like your new product development, that product development is there, sorry, not new product life cycle. There are 4 stages. In the same way, in the organization also it is considered there are 4 stages. Stage 1 organizations we call second one comes stage 1 organizations are those organizations, these are these small scale enterprises which are generally managed by a single person or an entrepreneur, right? तो इसमें क्या होता है? It is very simple. उनके objectives, goals, operation, सब कुछ it is totally owned by the manager or entrepreneur. There is only one person who is controlling the whole organization. These are called as stage 1 organizations. Then comes stage 2 organizations. These organizations are little wider, little bigger than the stage 1 organizations. इसमें क्या होता है? इनका scope थोड़ा सा operation का बढ़ जाता है. They start focusing on the functional specialization or the प्रोसेस स्पेशलाइजेशन. प्रोसेस ओरिएंटेड थोड़े हो जाते हैं कि मार्केटिंग के लिए थोड़ा एक अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के लिए थोड़ा अलग है,
ऑपरेशंस का अलग है, जो उसको थोड़ा सा अलग वे में इंडिपेंडेंटली उसे हैंडल करने लग जाते हैं. देन स्टेज 3 ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस which are very large, okay, and these are kind of, they have further subdivisions. जो subdivisions होती हैं वो semi autonomous होती हैं, कि हैं तो totally centralized from the main headquarter, but these are semi autonomous. वो अपनी अपनी जो मल्टी डिवीजन है उसको अपना सेमी ऑटोनोमस वे से सेमी इंडिपेंडेंट होती हैं, उसको ऑपरेट करती हैं. देन स्टेज 4 ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी complex organizations. Complex in the sense these are on a very large scale, multi plant multi product में डील कर रही होती हैं, अलग अलग तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती है, रिलेटेड अनरिलेटेड, you know, they are scattered all over and in all kinds of products, in all kinds of geographical areas. So these are your stage 4 organizations, and these are generally very, you know, very complex, okay, but mostly in the normal level, in the normal routine life, we get to see stage 2 organizations जहाँ पे अलग अलग departments होते हैं. These are very common, which can be easily seen in your surroundings. After that comes types of organizational structures. Types of organizational structures. Let's start with the entrepreneurial structure. Entrepreneurial structure is also known as the simple structure. Simple structure means, as we talked about it, there is only one person in the sense who is controlling, who is acting as a manager also, who is acting as a controller also, who is acting as everything. So this one person is controlling finance also, HR also, R&D also, everything, right? So it is a very simple structure. It is easily manageable. There is very clarity of objectives, goals. Okay, it is basically one control person, and all the organizations which start from the beginning, you take the example of Jindal, you take the example of Birla's, these all start with stage 1 organization. Generally that entrepreneur, one person starts the organization, उसके बाद वो expand करते रहते हैं, उस level पे पहुंचते रहते हैं, right? After that comes your functional organization. Functional organization means when you start grouping the activities or the task on the basis of the functions. जैसा हमने बात की थी that if we are talking about this is one organization, उसमें हमने अलग अलग एक्टिविटीज के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे हम एक्टिविटीज को ग्रुप कर देते हैं. So it might be marketing, finance, HR and operations. So this becomes your functional organization. इसमें क्या होता है, delegation of authority जो है वो managers के पास आ जाएगी, right? और specialized skill होगी. जो marketing का manager होगा, he'll be specialized in marketing. Finance का manager होगा, he'll be specialized in finance. HR वाला HR को, and this way it becomes little, it leads to the decentralization and it becomes little easier, right? After that we have divisional structure. Divisional structure says that you divide the centralized corporate into different divisions. You have to, there is a criteria, you divide them into different divisions, and that every division is further acting independently. उसका अपना सबका अलग अलग एक डिवीजन का, they start acting independently. And ये डिवीजन हम किस बेसिस पे करते हैं? We generally do it on the basis of product base, कि आपने टोटल आपका जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनी है, उसकी कितनी डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट लाइन है. on the basis of the product line, suppose सोप के लिए अलग कर दिया है, दूसरा प्रोडक्ट लाइन आपका मे बी बेबी प्रोडक्ट्स है, उसके लिए अलग कर दिया है, और आपके FMCG है उनके लिए अलग कर दिया. तो प्रोडक्ट के बेसिस पे जब आप डिफरेंट डिवीजन्स फॉर्म कर देते हो, और द अनदर क्राइटेरिया कैन बी योर कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर. कस्टमर बेस्ड स्ट्रक्चर इन द सेंस कि कस्टमर ग्रुप्स के बेसिस पे, कि बेबीज का अलग है, एडल्ट्स का या फीमेल्स का अलग है, एंड ओल्ड एज का अलग है, या यंगस्टर्स का अलग है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर्स यू कैन डू. द अनदर क्राइटेरिया योर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, क्या आपने कंपनी को डिविजन्स में
डिवाइड किया है, दे आर डिफरेंट डिविजन्स फॉर अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल टेरिटोरीज, कि आपने नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्ट जोन, और मे बी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑल्सो, दैट मेट्रोज में ऐसे है, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद एंड कलकत्ता में आपने आपका सेंटर बना दिया, मेन डिवीजन कर दिए हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ their particular respective zones, right? So this is done maybe on the for the geographical expansion के लिए बहुत अच्छा है this structure, market segmentation के लिए बहुत अच्छा है, diversification के लिए बहुत अच्छा है, but it somewhere it makes the things little complex, right? After that we have SBUs. We know what are SBUs, if you remember. SBUs are your strategic business units, which is a part of your main corporate, and from there, when strategies are formulated at every business unit, they have their own strategies, their own goals, their own objectives to achieve, right? So these SBUs are framed, or these are formed on the basis of by grouping the related businesses. एक टाइप के जो रिलेटेड बिजनेस है वो एक एसबीयू के अंडर आ जाते हैं, दूसरे टाइप के बिजनेस दूसरे के अंदर आते हैं, उसके बेसिस पे जब आपका फॉर्म करते हैं, दिस इज योर एसबीयू. सो जब एक कॉर्पोरेट को इट फेसेस प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द ऑपरेशंस, और डाइवर्सिटी हो इतनी हो जाती है, साइज बढ़ जाता है या नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ जाते हैं, सो इट इज बेटर कि आप हर एक उसमें इंडिपेंडेंट एसबीयू सेट कर दो जो अपने अपनी strategies पे काम कर रहे हैं. Those strategies are ultimately, contributing towards the corporate strategies. And the next one is matrix strategy. Matrix strategy, as the name suggests, till now we were saying they were vertical. We were talking about only the vertical authorities and responsibilities which were flowing. But in matrix strategy, what happens? In matrix, suppose there is manufacturing manager here, finance manager, and there is HR manager or operations manager. So वो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दे रहा है ऑर्डर्स, ये ऑपरेशंस वाला दे रहा है, बट व्हाट डू वी डू, हम एक एक स्पेशलाइज्ड हेड जो हैं उनको हायर करते हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी. दीज आर योर प्रोजेक्ट ए मैनेजर, प्रोजेक्ट बी मैनेजर. अब जो प्रोजेक्ट ए मैनेजर है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी इधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इधर फिनेंस यूनिट, और इधर ऑपरेशन यूनिट. सो व्हाट हैपन नाउ, जो प्रोजेक्ट आपका ए का मैनेजर है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग आपकी इधर से भी चल रही है, हॉरिजॉन्टली आल्सो इट इज फ्लोइंग, एंड इट इज आल्सो फ्लोइंग vertically. So it creates a matrix. So what is happening, आपके दोनों साइड से there is dual responsibility, there is dual reporting, there is a dual communication. So it creates a little overlapping of the duties. Although it is very good. अब आपका जो प्रोजेक्ट ए का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर था वो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग तो देख ही रहा है फॉर ऑल द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए के लिए भी, प्रोजेक्ट बी के लिए भी. बट ऑन द सेम साइड आपके जो स्पेसिफिकली आपने एक एक प्रोजेक्ट के लिए जो हायर किए गए हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द, ये प्रोजेक्ट बी वाला जो है वो कंसर्न है सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपने प्रोजेक्ट के फाइनेंस के लिए, अपने प्रोजेक्ट की ऑपरेशन के लिए. यू गेटिंग दैट थिंग? सो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स and it leads to the dual of everything. So it becomes, you need to have a very good reporting system in it, very good coordination, very good, you need to remove the overlapping of the things, otherwise it can become, so there has to be very skilled person who are involved and a very effective system which will be flowing in it, otherwise it can become very complicated. Other than this, we have network structure. Network structure is nothing but network structure, you can say it is there is no structure at all. No structure in the sense
कि आर जस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम समवेयर, आपने आउटसोर्सिंग के लिए आपने कोई एचआर हैंडल नहीं किया, दे नो इट इज अ वर्चुअल स्ट्रक्चर, कोई ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, आपने इधर आउटसोर्सिंग के थ्रू यू आर गेटिंग थिंग्स डन, इसमें कोई हायरार्की नहीं है, फाइनेंस आप कहीं और से असिस्ट कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कहीं और से करा रहे हो, सो यू आर जस्ट सिटिंग एंड कंट्रोलिंग, but there is no particular structure which is flowing. Okay, there is no organization is formed as such, so virtually you're getting things done. So it is a kind of cobweb, it is a kind of cobweb कि कहीं से भी कुछ भी आप काम करवा रहे हो एंड उसको सारे को मैनेज कर रहे हो, so it is a virtual structure. Other than this, there are some different kinds of structures also. These are all types of product based, customer based, process based, geographical based. These are all kinds of divisional structure. On these are the criteria on which basis we make the divisions. Other than this, there are some another kinds of emerging forms of structures. These structures are just emerging now. Okay, just now we talked about the existing which have been prevailing from the past, from history, but emerging forms of structures are those structures which are just coming into existence now. So horizontal organizations, these are those organizations which are based on the processes which provide the product or service to the customer rather than functions. ये अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे या प्रोसेस के बेसिस पे वर्क करते हैं एंड हॉरिजॉन्टली फ्लो करते हैं. Then delaminated क्या करता है? It takes into consideration product and process also and the functions also. It combines both. After that, we have mechanistic structures and organic structures. Mechanistic structures, as the name suggests, बहुत mechanical होता है वो. Just like machineries and robotic, it is very rigid. जैसे define कर दिया है आपको वैसे ही काम करता है. हायरार्किकल होता है बहुत. इट इज सुटेड टू स्टेबल कंडीशन जहाँ पे आपको कोई चीज में चेंज ही नहीं होती है. तो ऑब्वियसली वंस यू हैव सेट अप स्ट्रक्चर, you keep on flowing, you keep on following it, right? And organic structure is that which is flexible, where there are changes happening in the environment or changes happening in your organization internal environment also, वहाँ पे आपका organic structure काम करता है. And other than this, if you combine both the structures, then it is called as ambidextrous organization structure. Ambidextrous, you know the word ambidextrous, which makes use of both the things. Any person who can write with both the hands is called as ambidextrous person. That person is ambidextrous means वो left hand and right hand दोनों से he or she can write, right? So it is an example we have taken of biotechnology consortium. This is how all the organizational activities are interdependent and what is the relationship of this. See, this biotechnology we are talking about, it is taking help of the financial institutions also. State ने उसको set up किया था research institution के लिए. They cannot come in front and handle the technology things which are happening. So what it does, all kinds of organizations and all kinds of activities are interdependent with each other, and this is how it operates. So then the structure takes form on the basis of the interdependency of the organizations with other activities and with other organizations, right? So it was all about structures, and in the next class we'll be covering organizational design and change, how it affects the strategy implementation. We'll see that part in the next class. So any queries now? You can put up your queries.